Viewers, the focus is back on the Uniform Civil Code. Will Uttarakhand become the first state in India after independence to adopt the Uniform Civil Code? That's the question that will be answered today in the Assembly, because the draft of the landmark legislation is all set to be tabled today. And let's listen in to the Chief Minister's remarks ahead of the tabling. आज की मंत्रिमंडल की बैठक में हमने आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी को, समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। आगामी सत्र में हम इसको सत्र में रखेंगे और विधेयक बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। Now, viewers, the almost 800-page report prioritizes women's equality, bans practices like polygamy, and also recommends uniform marriage age across religions. And after becoming the Chief Minister for a second consecutive term, Dhami accorded top priority to fulfilling his pre-poll commitment and promise, announcing the constitution of a committee to prepare the draft of the UCC at his first meeting of the state's cabinet after assuming office. And this committee that was formed in May took nearly 2 years and 4 extensions to prepare the draft. The panel received about 2.3 lakh written suggestions online and also held more than 70 meetings in which the members interacted with around 60,000 people in the course of preparing this particular draft. Now, if adopted, it will be a massive leap forward in ensuring equal rights for women, irrespective of religion, caste, class, and even community. Times Now has even accessed the details of the draft earlier, and they gave a major indication about what the law could look like, with the axe falling on several regressive practices, with women being at the receiving end of most of them. Here is what the UCC will entail when it comes into force. Let's talk about what the UCC has in store, because standard marriage age for women is set to be set. Registration of marriage has been made mandatory. Uniform divorce laws across religions will also be part of this draft. Complete ban on polygamy, abolition of halala and iddat, equal inheritance for men and women in terms of assets of the family, that is also there. And what happens currently is that Muslim women married at 15 years puberty, they will be allowed to get married. Registration of marriages has not been made mandatory. This is what is there in the current scenario. Talaq and khula provisions in Muslim law continue to exist. Up to 4 marriages allowed for men. Permission exists in Muslim law. Female hire gets only half of the male, the sibling of the family. And the aim is very simple, viewers, to do away with all these regressive practices, with the reducing of women to even second-class citizens. That's what these practices aim at, and to remove clauses that deny them parity with men in a marriage, thanks to the inherent shortcomings of personal laws that they continue to exist. And on the day the final draft was submitted to the Chief Minister, he expressed hope that many states would follow the example of Uttarakhand and use this particular template provided by his state to implement the Uniform Civil Code. In fact, Assam Chief Minister has already expressed his intent. However, there are many others who see a bid to persecute and not liberate. जब भी यूसीसी का नाम आता है तो लोगों को लगता है कि शायद मुसलमान हिंदुस्तान में इससे सबसे ज़्यादा आहत होंगे। ऐसा नहीं है। यूसीसी एक ऐसा मसला है, जितने भी हिंदुस्तान में धर्म और पंथ हैं उन तमाम को ये कहीं ना कहीं अटैक करेगा, क्योंकि सबके अपने लॉज हैं। मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सड़कों पे आए, जैसे किसान आए, किसानों ने 1.5 साल संघर्ष किया, 3 बिल वापस हो गए, कुर्बानी देनी पड़ी। मुसलमानों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है तो जैसे आपने सुना होगा कि अभी 600 साल पुरानी मस्जिद महरौली में डीडी ने डेमोलिश कर दी बिना नोटिस के। ज्ञानवापी में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है मुसलमान अगर तमाशाई बन के देखता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों के कदम आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा है कि यूसीसी में जिस तरीके से सरकार का रवैया है, ये देश में नफरत और घृणा की एक नई राजनीति का अवसरवाद है। मैं मानता हूँ कि सार्वजनिक रूप से सबने निंदा करनी चाहिए।
छात्रों में भेदभाव करना, युवाओं में भेदभाव करना, भविष्य पे भेदभाव करना इस सरकार की नीति बन गई है, जो एक अराजकता की ओर देश को ले जा रही है। There you see, viewers, two reactions have already said that this particular tabling of the UCC draft today in the Assembly, the document and what is to come only is a bit to create hatred among communities and a bit to divide, where we also heard a prominent face, an Islamic cleric, also saying that this is not what they expected, and they've also fear-mongered in their statements, because he says that UCC is something that will attack the beliefs of people of every faith in the country. Now, while the country and the Chief Minister is looking to do away with regressive practices and ensure equality for women in the society, we have individuals like Maulana Sajid and also Jitendra fear-mongering and also creating a confusion on what is to come in this particular legislation. Let's also talk to Akshay and Abhishek. First, coming to you, Abhishek, good morning. Now, it's a big day for Uttarakhand because Pushkar Singh Dhami will be tabling the UCC draft in the House today. But here we have individuals continuing to fearmonger and also create confusion in the minds of people. देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज विधानसभा सत्र का आगाज है, लेकिन आज कंडोलेंस की वजह से एक विधायक की मृत्यु होने की वजह से, अभी कुछ दिन पूर्व मृत्यु होने की वजह से आज विधानसभा सत्र को नहीं चलाया जाएगा। कंडोलेंस की वजह से आज बंद कर दिया जाएगा। 6 तारीख यानी कल विधानसभा के पटल पे यूसीसी का ड्राफ्ट रखा जाएगा, जिसके बाद ये उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा और अपने आप में बहुत बड़ी जीत भी होगी। जैसे राज्य सरकार दावे कर रही थी कि यूसीसी लाएंगे, चुनाव के 1 साल होने के बाद हम देखने को भी मिल रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है। और जितने जो सवाल उठा रहा है विपक्ष, लगातार सवाल उठा रहा है कि ड्राफ्ट हमें देखने को नहीं मिला, हमारे से सवाल नहीं पूछे गए, तो ऐसी तमाम चीजें हैं। लेकिन इसके बीच अच्छी खबर यह है कि विधानसभा सत्र में कल स्पेशल सत्र बुलाया गया है और यूसीसी को पटल पे रखा जाएगा। Viewers, the focus is back on the Uniform Civil Code. Will Uttarakhand become the first state in India after independence to adopt the Uniform Civil Code? That's the question that will be answered today in the Assembly, because the draft of the landmark legislation is all set to be tabled today. And let's listen in to the Chief Minister's remarks ahead of the tabling. आज की मंत्रिमंडल की बैठक में हमने आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी को, समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। आगामी सत्र में हम इसको सत्र में रखेंगे और विधेयक बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।